Propositional logic. We start with the definition of proposition. Proposition is the declarative statement that is either true or false. We can also define the proposition as the statement or assertion to which we can assign a truth value. There are two possible truth values. One is true and the other one is false. True mean 1 and false mean 0. तो proposition एक ऐसी declarative statement होती है जो true हो या false हो, या जिसको हम कोई truth value assign कर सकें, यानी हम उसे true कह सकें या false कह सकें. No maybes are allowed. What does it mean? No maybes are allowed. It means the propositions shall not be ambiguous. May be true, may be false. This is not allowed. It shall be explicitly true or false. बिल्कुल क्लियर कट या ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए, उसमें एम्बिग्विटी की इजाज़त नहीं है. मेबीज मीन एम्बिग्विटी, कोई एम्बिग्विटी ना हो. हम ये ना हो कि वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो और एट द सेम टाइम फॉल्स भी हो. एम्बिग्विटी अलाउड नहीं है. लिहाजा एक्सप्लिसिटली स्टेटमेंट या ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए. इसलिए हम कहते हैं कि वो स्टेटमेंट जिसको हम ट्रुथ वैल्यू असाइन कर सकें या जो एक्सप्लिसिटली ट्रू हो या फॉल्स हो, उस स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहेंगे. इसकी हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1, ऑल cows are brown. Now this is a declarative statement. This is an assertion to which we can assign a truth value false. We can assign a truth value false to this assertion or to this statement. So this is a proposition. All men in the universe are married. Now this is a false statement, so it is a proposition. X plus 8 is equal to 11 when x is equal to 3. Now this is a true proposition. This is a true statement, so this is a proposition. Consider another example. Peshawar is the capital of KP. This is a true statement, so this is a proposition. Now consider the statement what is time? Whether this is a proposition or not. No, it is not a proposition. Why? Why it is not a proposition? Because this is a question statement. This is the question. And we have defined the proposition as the declarative statement.
This is not a declarative statement, this is a question statement. So this is not a proposition. Question is not allowed because we cannot assign a truth value to this statement, what is time. We cannot say it true or we cannot say it false. This is a question and questions are not allowed, so this is not a proposition. How beautiful she is. This is an exclamation. This is also not a declarative statement. This is not an assertion. So this is not a proposition. Consider another example. Do not pass go or shut the door. These are the command statements. This is the command or request. So these are not declarative statements, so these are not propositions. It means if the statements are in the form of questions, either in the form of exclamations or command or request, these are not propositions because we cannot assign the truth value to these statements. Now consider another example. X plus 8 is equal to 11 when x is equal to 3. This is proposition because we can assign a truth value true to this statement. But x plus 8 is equal to 11, this statement is either true or either false. It depends upon the value of x. So which value you assign to this variable x? For example, if you assign the value 3 to this variable x, then it will become true, and if you assign the value 5 to this variable, then it will become false. So may be true, may be false, depending upon the value of x. So this is not a proposition, this is an ambiguous statement, not a proposition. Because we have not defined the variable x, that led towards the ambiguity. Here the variable x have been explicitly defined. So this is an assertion, this is a statement to which we can assign the truth value. But here we cannot assign the truth value. We can say this statement, or we can declare this statement either true depending upon the value of x, or at the same time we can say that this statement is false depending upon the value of x. So both values can be assigned at the same time, either true or false. So this is ambiguous because we have not defined x in this statement, so this is not a proposition. Now propositions are classified into two broad categories. One are called atomic propositions and the other one are called molecular propositions. Atomic propositions are those propositions which cannot be further divisible into propositions. So the propositions which cannot be further divisible into propositions are the statements which are in the simplest form, and we cannot divide into further meaningful bearing units. Simplest form means the statements
to which we cannot further divide into meaningful parts is called the simplest form of the statement. So the simplest form of the statement are called atomic propositions. For example, moon is made of cheese. Now this is the simplest form of statement. If you will try to break this statement into parts, then these parts will be meaningless. So such type of statements are called atomic propositions. It means this statement, moon is made of cheese, cannot be further divided into meaningful parts, or we cannot divide this proposition into further propositions. So this is atomic proposition. Now, molecular propositions are those propositions which are further divisible into propositions. Those statements which are further divisible into propositions, then that propositions are called molecular propositions. For example, apples are red and elephants are big. Now this is a proposition. This is a declarative statement. Apples are red and elephants are big. You can divide this statement into further two meaningful statements. Another one will be apples are red, elephants are big. On the basis of this connective and, we have chopped the statement into two meaningful statements. हमने इस स्टेटमेंट को फर्दर दो स्टेटमेंट्स में डिवाइड कर दिया है. एक स्टेटमेंट हमारे पास आ गई एप्पल्स आर रेड और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास आ गई एलिफेंट्स आर बिग ऑन द बेसिस ऑफ दिस कनेक्टिव. सो दिस इज कॉल्ड molecular proposition. It consists of two further atomic propositions. One atom is apples are red and the other one is elephant are big. And when you combine these two simple statements by using a connective and, this will become a molecular proposition. Apples are red and elephants are big. Now this is a molecule or molecular proposition, and these are two atomic propositions. So the connectives and are, but, etc., they play a very important role to form the molecular propositions. Now consider the example. Now consider the example. Elephants and lions are animals. Here you have used a connective and, but still the proposition is atomic.
इसका मतलब ये है कि अगर कनेक्टिव आ जाए किसी स्टेटमेंट में तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोपोजिशन जो है वो मॉलिक्यूलर होगी। कनेक्टिव्स का आना गारंटी नहीं करता कि एक प्रोपोजिशन मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूलर उस वक्त बनेगी जब आप उस स्टेटमेंट को फर्दर पीसेस में चॉप कर सकें। अब यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को फर्दर मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स में चॉप नहीं कर सकते। ऑल्दो के कनेक्टिव आया हुआ है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हम फर्दर चॉप नहीं कर सकते। अगर हम चॉप करने की कोशिश करेंगे तो मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स हमारे पास आएंगी। लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या होगी, एक एटॉमिक प्रोपोजिशन होगी। तो कहने का मकसद ये है कि कनेक्टिव्स का आ जाना गारंटी नहीं करता कि एक प्रोपोजिशन मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन बन जाएगी। क्राइटेरिया ये है हमारे पास कि हम उस स्टेटमेंट को फर्दर स्टेटमेंट्स में क्या कर सकें, इजीली चॉप कर सकें। और वो स्टेटमेंट्स जिसमें आप चॉप करेंगे वो फर्दर क्या होनी चाहिए, वो खुद भी क्या होनी चाहिए, प्रोपोजिशंस होनी चाहिए। इनमें से हर एक स्टेटमेंट पे प्रोपोजिशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर चॉप करने की कोशिश करें तो जो पीस बनेंगे या जो स्टेटमेंट्स बनेगी वो प्रोपोजिशंस नहीं होंगी बल्कि मीनिंगलेस होंगी। लिहाजा इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, एटॉमिक प्रोपोजिशन होगी, ये मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन नहीं होगी। हालांकि इसमें कनेक्टिव आया हुआ है लेकिन प्रोपोजिशन एटॉमिक होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है निगेशन ऑफ प्रोपोजिशंस। Negation of propositions. So what is negation? अगर हमारे पास एक proposition है, let's suppose moon is made of cheese, ये false proposition है, और आप इस false proposition को true proposition में convert कर दें तो फिर आप उस प्रोपोजिशन को कहेंगे निगेशन। तो कैसे निगेशन होगी, यहां पर आपने फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग नॉट। कैसे, मून इज नॉट मेड ऑफ चीज। नाउ दिस इज ए ट्रू statement, so this is a proposition. Again, this is a proposition. So the process of converting a false statement into true, or true statement into false is called negation. This is called negation. The negation is represented by this symbol, tilde sign, or by this sign. So if we represent the proposition moon is made of cheese with a variable p, so the negation will be represented by not p or in this way not p. So if p is false, not p will be true. You will negate the proposition by applying not. This is one method to negate a proposition. You will have to apply not. And the process of converting a false proposition into true and true proposition into false, this is called a negation. मेरे कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स है उसको आप ट्रू में कन्वर्ट करें, या जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको फॉल्स में कन्वर्ट करें, तो इस सारे प्रोसेस को निगेशन कहते हैं। लेकिन आपने नॉट अप्लाई करके करना है। इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप किसी भी प्रोपोजिशन से पहले प्रीफिक्स उसमें एक उसकी निगेशन करने के लिए आप इस तरह कर लें, इट इज नॉट द केस, मून इज मेड ऑफ
चीज, यानी किसी भी प्रोपोजिशन से पहले अगर आप ये लिख दें इट इज नॉट द केस, तो फिर उसकी निगेशन होगी और अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोनों तरीके ठीक हैं। अगर आप लिखते हैं मून इज नॉट मेड ऑफ चीज, या अगर आप इस तरह लिखते हैं कि इट इज नॉट द केस मून इज मेड ऑफ चीज, तो दोनों तरीकों से आप निगेशन कर सकते हैं। पहले जैसे आपने निगेशन की नॉट की, क्या था हमारे पास, मून इज नॉट मेड ऑफ चीज, ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो ओरिजिनल प्रोपोजिशन थी पी, मून इज मेड ऑफ चीज, उसकी हमने निगेशन की इट इज नॉट द केस, या तो शुरू में लिख दें इट इज नॉट द केस और आगे फिर वही प्रोपोजिशन लिखें पी, मून इज मेड ऑफ चीज, इट इज नॉट द केस मून इज मेड ऑफ चीज, तो ये निगेशन हो जाएगी। या आप उसके ऊपर नॉट अप्लाई कर दें डायरेक्टली, मून इज नॉट मेड ऑफ चीज, तो आपने फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास निगेशन आ गई। हमारे पास निगेशन का जो ट्रुथ टेबल बनेगा, ट्रुथ टेबल क्या है इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर हमारे पास प्रोपोजिशन है P, तो उसकी जो निगेशन होगी नॉट P। अगर ओरिजिनल प्रोपोजिशन P फॉल्स है तो उसकी जो निगेशन होगी वो ट्रू होगी, और अगर ओरिजिनल प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसकी जो निगेशन होगी वो हमारे पास फॉल्स होगी। हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। हमारे पास एक प्रोपोजिशन है x plus 8 is equal to 11 when x is equal to 3। ये हमारे पास एक ट्रू प्रोपोजिशन है और इसको अब हमने निगेट करना है, नॉट p। तो अब हम कैसे निगेट करेंगे, इसका एक तरीका तो ये है कि आप लिख दें x plus 8 नॉट अप्लाई करें। कैसे, x plus 8 is not equal to 11 when x is equal to 3। तो अब ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, हमने नॉट अप्लाई कर दिया, इक्वल टू को नॉट इक्वल टू कर दिया, तो ये हमारे पास ट्रू प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जब x की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे तो वो 11 आएगा और आपने कहा नॉट इक्वल टू, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लिहाजा ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गई है, तो p की जो निगेशन होगी वो होगी x plus 8 नॉट इक्वल टू 11 when x is equal to 3। या उसी तरीके से आप लिखें p नॉट p, कैसे, इट इज नॉट द केस when x is equal to 3 x plus 8 is equal to 11। तो भी आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं निगेशन की। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने एक प्रोपोजिशन लिखता हूं, ऑल men are married। अब ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर मैं इसकी निगेशन करूं, all men are not married, तो भी फॉल्स होगी। अगर मैं कहूं कि दुनिया के तमाम मर्द शादीशुदा हैं, तो भी फॉल्स है। और अगर मैं ये कहूँ कि तमाम मर्द शादीशुदा नहीं है, तो भी फॉल्स है। इसका मतलब है नॉट अप्लाई करने के बावजूद फॉल्स फॉल्स रहा है, ट्रू में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये निगेशन जो है करेक्ट तरीके से नहीं हुई, दिस इज नॉट ए करेक्ट निगेशन। तो फिर आप कैसे करेंगे इसकी निगेशन? आप हमेशा याद रखें कि जिन स्टेटमेंट्स में ये क्वांटिफायर्स आ जाते हैं, क्वांटिफायर्स हमारे पास क्या है, जैसे ऑल, सम, मैनी, फ्यू, तो वहां पर आपको जरा केयरफुली इसकी निगेशन करनी होगी। आपने अगर डायरेक्ट नॉट अप्लाई कर दिया तो चांसेस हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स रहे या ट्रू स्टेटमेंट ट्रू रहे। इसका मतलब है वो निगेशन प्रॉपर नहीं होगी। वो स्टेटमेंट में क्वांटिफायर्स आ जाए, नॉट अप्लाई मैनी, फ्यू, आपका फोकस उसी चीज पर होना चाहिए कि नॉट ऐसे अप्लाई करें
कि फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू में कन्वर्ट हो जाए या ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आप इसको कैसे करेंगे? इसका एक तरीका तो हमारे पास ये है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको क्वांटिफायर को भी चेंज कर दें, ऑल को सिंगुलर में कन्वर्ट कर दें। देयर एग्जिस्ट अ मैन हु इज नॉट मैरिड। अब ये ट्रू हो जाएगा कि कम से कम एक मर्द ऐसा है जो शादीशुदा नहीं है, तो अब ये ट्रू हो जाएगा। आपने कहा था ऑल मैन आर मैरिड, फॉल्स है, और फिर आप कहते हैं देयर एग्जिस्ट ए मैन, कोई मर्द ऐसा है, कोई देयर एग्जिस्ट ए मैन, कोई मर्द ऐसा है जो कि शादीशुदा नहीं है, तो अब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है आपने इसको ऑल को एक सिंगुलर के केस पर कन्वर्ट कर दिया। देयर एग्जिस्ट ए मैन हु इज नॉट मैरिड, नॉट अप्लाई किया है, लेकिन आपने साथ उसके साथ क्वांटिफायर को चेंज किया। तो कहने का मकसद ये है कि वो स्टेटमेंट्स जिनमें, वो प्रोपोजिशंस जिनमें क्वांटिफायर्स आ जाएं, वहाँ पर आपने ज़रा एक्स्ट्रा केयर अप्लाई करके, एक्स्ट्रा केयर के साथ उसको निगेट करना है, नॉट अप्लाई करें। लेकिन ध्यान रखें ये ना हो कि फॉल्स फॉल्स रह जाए, ट्रू ट्रू रह जाए। आपका फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि फॉल्स स्टेटमेंट को आपने ट्रू में कन्वर्ट करना है या ट्रू को आपने फॉल्स में कन्वर्ट करना है, फॉल्स में कन्वर्ट करना है। नॉट ऐसे अप्लाई करें कि फॉल्स ट्रू में प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाए या ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्वांटिफायर को प्रॉपरली ट्रीट करना होगा। तो हमारे पास P था ऑल मैन आर मैरिड, इसको हमने नॉट P यानी उसकी निगेशन कर दी, देयर एग्जिस्ट ए मैन हु इज नॉट मैरिड। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टेटमेंट है P, सम ऑफ Turab's answers are wrong। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लेट्स सपोज मैंने 10 क्वेश्चंस किए तुराब से, 10 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मैंने उसे 10 क्वेश्चंस किए, जिसमें से फॉर एग्जांपल 2 5 8 10 ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। चलिए ऐसा कर लेते हैं, सम ऑफ तुराब्स आंसर्स आर रॉन्ग, इसका मतलब कुछ आंसर रॉन्ग है तो ये ट्रू है। अगर मैं इसकी निगेशन ये कर दूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसने गलत तरीके से अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 5 8 और 10 गलत अटेम्प्ट किए, तो फिर इसलिए मैंने कह दिया कि ये ट्रू है, सम ऑफ तुराब्स आंसर्स आर रॉन्ग, आपको समझाने के लिए। अब अगर मैं इसकी निगेशन करूं, सम ऑफ तुराब्स आंसर्स आर नॉट रॉन्ग, तो भी ट्रू है, क्योंकि कुछ तो ठीक भी नहीं थे। आर नॉट रॉन्ग, ये भी ट्रू है। इसका मतलब है मैंने नॉट अप्लाई किए हैं, लेकिन स्टेटमेंट ट्रू से ट्रू में रही है, ट्रू से फॉल्स में कन्वर्ट नहीं हुई। इसका मतलब है ये निगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुई। हमें ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना है या फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करना है। फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू में कन्वर्ट होनी चाहिए या ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स में कन्वर्ट होनी चाहिए, और यहाँ पर ट्रू में कन्वर्ट हुआ है। हमने नॉट अप्लाई की है, लेकिन ट्रू स्टेटमेंट के बाद, नॉट अप्लाई करने के बाद भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्वांटिफायर आया हुआ था सम, जिसको आपने यहाँ पर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया। नॉट अप्लाई किया है, लेकिन आपने क्वांटिफायर को इग्नोर किया है, तो लिहाजा ये निगेशन सही तरीके से नहीं हुई। अब इसकी प्रॉपर निगेशन क्या होगी, करेक्ट निगेशन क्या होगी? आपने क्वांटिफायर को डील करना है। अगर मैं नॉट और क्वांटिफायर इन दोनों को इकट्ठा ट्रीट कर लूँ और सम की बजाय मैं कर दूँ नन ऑफ